Yes, sir. I think I'll join my video by mobile phone. तो आपका प्रेजेंटेशन आपने शेयर कर दिया है सर? Pardon, sir? आपका प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया है आपने? हाँ, मैं कर दूंगा सर. ओके ओके. और किसका है? एक ज्योति मैम का है, उन्होंने बोला है कि आज राइट नाउ शी इज नॉट, टुडे शी इज नॉट ओके. सर मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना सर? हाँ, नाउ आई कैन सी. ओके सर. तो मीना मैडम इज देयर. डॉक्टर मीना इज देयर. They're calling, sir. I'm just calling her, sir. Yeah, please, thank you, thank you. Understanding the need of student support in Health University of India. Yes. So we'll wait for 2-3 minutes and we'll start. I think ये इको आ रहा है ना, इसलिए जो भी नहीं बोल रहा है वो म्यूट कर देगा, तो इको नहीं आएगा. सर एक्चुअली मैंने मोबाइल और ये दोनों चालू किया है. हाँ, तो एक काम कीजिए, एक को म्यूट कर दीजिए, म्यूट, और उसका आउटपुट भी बंद कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा. इनपुट और आउटपुट दोनों बंद कर दीजिए, जिसको आप यूज नहीं कर रहे ना उसको, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. आई एम ट्राइंग सर. क्योंकि ये आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मुझे भी होता है बहुत बार, क्योंकि ऑडियो मोबाइल से अच्छा आता है और प्रेजेंटेशन लैपटॉप से करना पड़ता है. So now disconnected, so there is no echo, I suppose. Yes, now no echo. I think Okay, let's start. मुझे एक आज नया थॉट आ रहा है. एक श्लोक के सहना भवतु सबको आता ही होगा, तो बिल्कुल सर. भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, प्रेयर्स करके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. ठीक है. विल ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति. यस सर, आप स्टार्ट कीजिए. Okay sir. So my topic is understanding the need for student support in a health University of India. Health science education is competitive and places rigorous emotional and psychological demands on the students, and especially it has been shown that dental students are more stressed than their peer group in medical or other health related subjects. And the reasons being a lack of sufficient time, inability to manage their time, concerns about grades, fear of failing,
difficult interactions with faculty, and financial issues. So the stresses have been found to vary with age, gender, relationship status, personality types, and so on. And some students cope better than the others, and high stress levels result in substance abuse, impairing professional judgment, etc. So the previous thinking was that pressures are usually inherent in any educational program, and that these stresses usually help the students to cope better in future life, and these pressures are part of the the learning process. However, the need for support programs have become evident, and the context with which I have chosen this topic is in our university. We have annual surveys regarding levels of student satisfaction. Even though it is a regular feature, they often point to the need for improvement in different aspects, but not in detail. So, and not much of action is taken on that input. So, as a component of our institutional infrastructure, student support was generally found to be one which requires little attention. So, support needs to be provided in a way that ensures it is utilized. Mainly, it has to be utilized. Whatever support we claim we are providing, it has to be meaningful and it has to be utilized by the students. So, achieving this requires institution to examine its context, culture, and assumptions that underpin its activities. So satisfaction survey primarily seeks to establish levels of satisfaction and does not actually probe into student views about access. So this is the gap. It doesn't actually look into whether it is actually accessed, used, and also whether it is useful or not. So this study is planned with the assumption that student perspectives are vital, and hence we'll explore concept of institutional support from perspective of students at our institution in order to better understand relationship between students' articulated wants and needs and the support which is provided. So the aim of the study is to contribute to an improved understanding of the support needs of the students in the institution and make recommendations for providing an स्लाइड आगे नहीं जा रही है, सिर्फ अभी चेंज नहीं हुआ सर? हो गया. Yes sir, yes sir. And also to examine the kinds of services that are provided, to investigate factors that students identify as enhancing or inhibiting their use. And basically the questions will be framed according to a key notion that emerge from the earlier stages of the study. That is, in the sense, the study will be in two parts. Slide I get input. Okay, sir. So the study design will be like a case study approach. It will be a qualitative type of research, and this study will be used because of its capacity to probe a bounded system, that is, it's within an institution. So it can be conducted in a controlled atmosphere in a way that involves the in-depth analysis of the phenomenon being investigated. So we'll be using a mixed methods procedure. Basically, mixed methods has capacity to minimize the weakness inherent in any single paradigm and to combine their strength, can lead to fuller picture of the phenomenon, and data obtained from the initial phases of the study will be able to strengthen the foundations of subsequent stages. So the first stage would be to identify from documentary resources of the institution regarding the available support for students, and basically it could be categorized under learning support, example being a library and bookshops, etc. Then administrative support, residential assistance in terms of hostels and student advisors on the campus, support for academic development, that is the first year coordinators, student council support and mentoring, etc. Support for security and well-being, campus security, health service and disability support. And then
social support, that is various sporting clubs and extracurricular clubs which help them to cope up with their extracurricular needs. So once having identified the various types of support available, then we go to the second stage where we interview some key informants in the area of student support selected for their experience in the area. So this could be administrators and faculty, and the purpose of this step is to identify issues related to student needs. And next we plan to conduct focus group interviews, especially with student volunteers drawn from the target cohort across 4 major faculties of our university. So we have medical, dental, nursing and physiotherapy. So we'll be choosing we will be doing one focus group interview in each of the faculty, and data obtained from these stages and in conjunction with findings from the previous research obtained through a review of scholarly literature to identification of themes and sub-themes that will be used to inform the final stage. That the final stage will be developing trial and administration of an online questionnaire. So this final stage would be the objectives being to examine the kinds of services that are provided in terms of their adequacy, value through previous data, to examine extent to which they are used and the context with which they are provided, and to investigate factors that students identify as enhancing or inhibiting their use. So questions will be framed according to the key notions that will emerge from the earlier part of the study. And ultimately, the consideration for students, support environment, awareness, usefulness, utilization, accessibility, all these things will be investigated. So this questionnaire, which is going to be developed, will again undergo a number of trials. The first version will be distributed to a group of 10 students and feedback will be obtained. The second online version will be then distributed to different groups of 10 students, will further be revised according to feedback received. So it is a multi-stage process to ascertain the reliability of the instrument, and further 15 students will undertake a retest exercise to yield a reasonable agreement rate. And ultimately, further, the students in 4 disciplines will be identified as the total population for the study, and of course permission will be taken from the university for approaching all the students through email, and the survey will be administered. So this is the methodology which is planned. And I have not actually developed the questionnaire as of now, but based on the literature which I have relied on, the instrument will comprise of 10 questions, and the survey will start with a set of questions that will request demographic data, and however the respondents will remain anonymous. The first question will set the scene for the study by inviting respondents to identify kinds of issues. There are questions that will follow identify respondents' knowledge of the institution's support. Then, where participants do not use a service, then they will be asked to identify the reason from a predetermined list. The data from this part of the questionnaire will be analyzed using the framework which is depicted in the next slide. The survey also will include open-ended questions that invite respondents to comment on such issues as how they view the available support services and how those services can be improved. So this will be the framework for the final analysis of the data obtained from the questionnaire. One thing I forgot was during the first stage of the study, second stage of the study, while doing individual interviews, we'll have to develop an interview guide. Again, this is something new for us. So I think maybe 1 or 2 classes are going to be conducted in future, I suppose, regarding in detail how to do an interview guide. So basically, I have taken this because 2 objectives. One is that there is a need for it in our institution, and second is I just wanted to explore qualitative research, which interested me during the one of the lectures 2 months back. So this is from my side, sir. Excellent, sir.
So before I comment anything, I request other participants. Any inputs from your side or anything you want to add? Anybody? But you sir, you keep sharing. Keep your slides. Yeah, okay, okay. Yes, anyone? Sir, I have a small doubt, sir. Padya, sir, how will you frame the questionnaire, sir? What is the guidance of questionnaires? I've read these articles which were provided to us. Basically, it has given me an idea about how a questionnaire has to be formed as such. But the actual topics which we are going to cover in the questionnaire will be decided by the first part of the study, where more or less we are clear about the type of support available in our university. But based on the focus group interviews and individual one-to-one interviews, we will analyze that data and some themes will develop, themes will emerge. Hopefully some themes will emerge and some sub-themes. So that will give us idea about what should be included in the questionnaire. That is how this methodology has been developed. I have followed one article, where they also did it in a different situation. But basic idea I got from there that first we do focus group interviews, where we will get themes and sub themes about the type of the perception of the focus. I mean the groups where we do the interviews. So based on those themes, we develop the questionnaire. And questionnaire should not be very lengthy because then it loses its effectiveness. So it will be a very focused, focused to only 10 questions, which will, based on the themes which will emerge from the first part. So this will be sent through the Google Form, sir? Yeah, this will be through Google Form by email, but this will be the last part of the study. That is the third part of the study. So the first part, I'm totally new to this, but it really interested me about, doing this focus group interviews. Even focus group interviews can be done online. That is what I learned through literature. It need not be, sitting together. It need not be even a physical meeting. We just identify a group of people who are having common interests, and then we can give them a questionnaire and analyze the data. And if required, we can have individual one-to-one interviews later. Thank you, sir. Sir, I have a question. Yes, ma'am. Sir, for questionnaires, what I understand is that we have to do phase validation and content validation. So since this is a qualitative, is it required that step, or we can not do that and proceed? I think Chinmay sir will advise on this, but like in my presentation, I told that first we will administer the questionnaire to around 10 students, take feedback. Take feedback from those 10 students, and then again there will be a second phase where we send it to more people, not in big numbers, but for validation. How exactly to do it? I think we need some guidance. So maybe first part would be your pilot study, sir, where you will be assessing the students' responses. That would be your pilot study. No, as far as I understand, Yes, sir. it is not a pilot study. Yes, sir. It is a part of the research process, the qualitative research process, where first we have to identify from a focus group as to what actually are because in a small population, as to what actual the feedback given by a group of students regarding availability, utilization, and effectiveness of the support system of the university. So then, based on the theme, Okay. like I think in the class we had discussed,
Yes, sir. Sir had told that in qualitative research, we Thematic. some themes will emerge out of the data. So using these themes, then we focus on those themes and develop a questionnaire. So I don't know whether this can be called a pilot study, but it is part of the process. That is what I have understood till now. Sir, is Let's there, do one exercise. Let's do one exercise. Right now I'm sharing one link in our chat box. Okay. So Okay. what you have to do, this link is of Google Doc. So either on mobile or anywhere you will be able to open it. Okay, in Google Doc I am just mentioning your number, roll number. So in front of your roll number, what you have to write is your experience of CCHPE कोर्स. अभी तक हमने जो कोर्स किया है उसका आपका रिफ्लेक्शन आपको डालना है. आपके जो भी दिमाग में आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हर एक को अपने रोल नंबर के नीचे ही लिखना है. सर अभी मैं ओपन हो रहा है. Sir, only roll number 1 is seen, sir. Type ourselves, sir. आप नीचे जाओगे तो नीचे अभी राइट नाउ आई एम एडिंग. Okay, sir. I am so you can just write your reflection in front of your roll number. Don't look at what other people are writing. Okay, sir. And after this, we will discuss sir's project slide by slide. So I am giving you 5 minutes. All of you write your reflection कि आपको अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कोर्स का कैसा रहा. That you have to write. You can add anything and everything in 250 words to 300 words. अपने आप रोल नंबर मत ऐड कीजिए. मैंने रोल नंबर ऐड ऑलरेडी कर दिए है. अंदर रोल नंबर लिखे हुए हैं. I think the person who is writing roll number 5, just go down. So by just writing roll number, I am blinding. Though you all are knowing whose roll number is what, but I don't remember it. So this is one type of blinding that I don't know who is writing what. So this will Sir, avoid I'm one type of unable to bias. type it, sir. Hello? Are you in mobile? Yes, sir, I'm on mobile, sir. So you have to actually download Google Doc app, then you will be able to write. Okay. Or you just do one thing, you just write in your WhatsApp. Okay, and then send to me on my WhatsApp. So 2 people have started writing, 3 people have started writing, rest are still, okay, no, more than 5 people have started writing. Very good. So I think let's take more time, no problem. So it's
8:24, sorry, 6:24 by 6:30. We will stop writing. So you will have still 6 minutes to write. Please write your reflection for CCHPE course. Anand sir, you have to write little bit more detail. You can include whatever you want to add, like regarding different resource people, regarding platform which you are using, different topics, timing, whatever is coming to your mind. Okay.
So I think only we will take more 2 minutes and then we will start discussing on what you have written. Sir, how to share the document with you? How to? How I'll share the document, or is it visible to you when I'm writing it? Yeah, I can see everything. Okay, I no need to share it with you, no, sir? No, no. Whenever you are writing, it is getting automatic save in within 30 half second or within 2 seconds. Oh, It get automatically okay, sir. saved. Okay, let's stop writing because this is exercise. Because if we will give time, it may take an hour. So we will stop now. And I request sir to stop sharing for a few minutes. Sir, actually, I'm trying. Okay. Okay, so I will share and it will be automatically unshare. Okay, okay. So what I'm going to demonstrate right now is just an example of what you can do in your qualitative research. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So right now you can just see the roll number 1 is says. So what is this? This is a transcription of what we can consider is we have done a focus group discussion with the group of 8 people or 10 people, and we have asked what is the reflection for CCHP course. So ideally, as sir has mentioned in his talk, that I should have one interview guide. Now, what is interview guide? Means I have a predetermined objective when I'm conducting a focus group discussion. So right now, my objective was to demonstrate you how qualitative research, a small gist of it. It is a small gist of it. What I'm right now sharing with you. That
when you are going to do a focus group discussion or key informant interview, what sir has said. So what you will do whenever you're doing the interview, you will take permission from them that you are going to record your conversation, either verbal, means either in audio or in a written form. So usually it is not possible for us to write down each and everything. So better we will record it. So when you start recording, first you will record the permission that okay, I am giving a permission to record my discussion, and then you will transcribe it. So just consider that whatever is written right now is not written by you, but it is written by me. Whatever you have said when I have done interview with you. Okay. So now let's read just. The dental education fellowship course covers wide topics. So let me underline this as a wide topic. Okay. So I'm just underlining this of dental education related to the course. अभी क्या है course curriculum, course outcome and research methodology. So again, these are the different topics which is covered. Then came assessment method. So I'm underlining it. Assessment method. The course mentors. Now here comes the mentor. Okay. So mentors, a good, very much experience in hand holding teaching. Okay. Now ये नाम है तो उसको हम जाने देंगे. All mentors are really teach very good. So teaching is very good. So this is also underlined. So like this, whatever you are transcribing, you are going to underline the things. See, it may happen that when I am underlying, I may underline different things. And for example, when Padiyar sir is underlying, he may underline something different based on the objective. Okay. So now let's go down. I'm just reducing the space of roll number 1 and roll number 2. So, okay, he's having difficulty or he is having, I don't know, reflection on WhatsApp, no problem. Now, enrich learning experience here. Okay. Different teaching method. Curriculum, design. Achieve your goal without suppressing. Okay. Rediscovering myself. So sometime if you feel that this is an excellent word, so you can use this line verbatim when you are writing your discussion. That and in inverted comma, you will make it italic that I was discovering myself, rediscovering myself. Okay. Learn how to prepare a Google form. Okay. अभी इसमें इतना आया. तो let's go down again. How to approach healthcare education. ये सीख, for example, structure documented process of research. ठीक है. Enriching experience. See, as you can, I hope you all are with me. Whatever Yes, I am doing, you are able to appreciate it. So if you see here, roll number 1 has written 4 lines and only targeted few things. Now, if you go to roll number 3, again, some different things. Okay. Now here, roll number 5, totally other aspects of course. Now, roll number 6 has written little bit detail. So why it has happened? Because I haven't given you any structure. मैंने आपको सिर्फ ऐसा बोल के छोड़ दिया था कि write reflection of CCHPE course. So this will happen if you will do focus group discussion without any questionnaire. Are you getting? आपको क्वेश्चनर इसलिए जरूरी है कि सब लोग जो आप पूछना चाहते हो वहां तक पहुंचे और आप सबकी डिटेल निकालो. वरना क्या होगा, जो अभी हो रहा है वो होगा कि मैं अपनी तरफ से देखूंगा, आप अपनी तरफ से देखोगे. तो ये हम नहीं चाहते हैं, सबका डिस्कशन हम चाहते हैं. तो इसलिए अपना फैकल्टी गाइड होना जरूरी है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई sir, what you are saying is
even for focus group discussions, you have to give some focus points on which the discussion should go on. Questionnaire You have to मतलब guide the discussion. हाँ आप पॉइंट्स ही देंगे ना सर कि इस हाँ पॉइंट्स के पॉइंट ऊपर. पॉइंट फॉर एग्जांपल इसी के लिए कि रिफ्लेक्शन के लिए मैं पूछता हूँ आपको कि आपको कोर्स कैसा लगा, तो अभी रोल नंबर 6 ने ऐसा बोला कि एनरिचिंग एक्सपीरियंस हुआ, ठीक So है, everything should तो be अभी in the मैं form of बोलूंगा a, it is in the form of a question or डिस्कशन पॉइंट, वी कैन स्पेसिफिकली यूज द वर्ड डिस्कशन पॉइंट, okay. ठीक है, लेकिन आपके पास होना चाहिए कि अगर किसी ने बोला कि रिगार्डिंग एक्सपीरियंस, सो आई विल प्रोब आस्क अ प्रोबिंग क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनरिचिंग. एनरिचिंग मतलब क्या, तब फिर आगे आगे आएगा कि हमको इतने अच्छे टॉपिक आए, तो कौन कौन से टॉपिक, मतलब यू विल डिग इनटू ईच एंड एवरीथिंग more and more, and that's why the name is focus group discussion. You are focusing on one particular thing as like a student support. कि आपको फॉर एग्जांपल योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ अबाउट योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, तो मैं बोलूंगा सर अच्छा है, तो अच्छा मतलब क्या, लोग अच्छे हैं, टाइम कम लग रहा है, क्या है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट यू विल आस्क. तो जैसे आप बोलोगे मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं टाइम तो तुरंत हो जाता है, दूसरा दो बंदे बोलेंगे नहीं नहीं इतना क्विक नहीं होता है, मेरे को इसमें इतनी देर लगेगी उसमें इतनी देर लगेगी. सो समटाइम यू टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, आप कोई कंट्रोवर्शियल अंदर सेंटेंस भी बोल सकते हो ताकि डिस्कशन हो, और सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. तो जैसे सबका इन्वॉल्वमेंट होगा ये पूरा डिस्कशन आएगा कौन क्या बोला ये, और उसके बाद वी विल अंडरलाइन व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. Okay. Okay. So here she has also written waiting for online get together. Okay. हैंड होल्डिंग हुआ बाय मेंटर्स, तो हैंड होल्डिंग भी आएगा इसमें, ठीक है. करिकुलम डेवलपमेंट आ गया, देन पुलिंग और ओन स्ट्रिंग आ गया, तो फाइन ट्यून अवर लर्निंग जर्नी, ठीक है. अभी नंबर 7 में जाता है अनदर टेंजेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. टीचिंग एंड लर्निंग इज अ बिग फ्रेमवर्क. I consider myself facilitator. तो ये क्या हो रहा है, you all might be thinking that I am underlining separate line, and when if you underline you may underline separate line. Is it true? Yes sir. Are you differing up to certain point? And that's why you should do this underlying in a group. आपके करने के बाद आपके कोई को फैसिलिटेटर है, कोई इन्वेस्टिगेटर, उसको आपको देना है कि नाउ यू डू, ठीक है. तो ये हर एक कीवर्ड्स बन के आ रहे हैं कि फ्रेमवर्क हो रहा है, एजुकेशनल सिस्टम हो गया, ठीक है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, exceeds my expectation. Missed 2 session. अभी जब मिस 2 सेशन की बात आई है तो मुझे आप लोगों को एक बात बोलनी है. मिस आई वुड लाइक टू से वन थिंग दैट see we are putting all the recorded video on our learning management system, so those who have missed please read it. And I was just going through Hanel ma'am's recording yesterday and I realized that that session was so much good that not only it will help in our professional life, if you will connect with your personal life also. See, we all are married, I don't know everyone's status, but if you just read or listen that session keeping in mind husband wife relationship, it will also help us to improve our personal relationship, your daughter, your son's relationship with you. So that challenge जो पूरा हेनल मैडम ने सिखाया था, इट इज सो गुड दैट इट विल हेल्प यू टू ओवरकम योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स. न्यू टर्मिनोलॉजी,
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द, अभी जो मैंने बात किया वही मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन वही आया है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीजी स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो वो फिर एक थीम में आएगा कि ओवरऑल कैसा था, टॉपिक क्या लर्न किए, असेसमेंट क्या हुआ, ठीक है, कलीग्स कैसे थे, ये तो बहुत छोटा है। तो इस तरह से अपनी थीम उभर के आएगी। तो फॉर एग्जांपल अभी इसके बेसिस पे अभी हम कितने बाकी है, दो नीचे देख लेते हैं, 8 नंबर हो गया है, 9 नंबर और 10 नंबर देख ही लेते हैं। हाउ टू फॉर्मुलेट and implement any type of change in our institute. I can put my words in front of superiors. So these are the, we can say, behavioral changes among participants. I can convince them and listen my idea. Motivating. Okay. Involves research too. More and more understanding of myself, oneself. Qualitative research. ठीक है। तो अभी जितना भी हमने अंडरलाइन किया, अगर आप देखोगे तो हमने पहले कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं, उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये टीचिंग टॉपिक के अंदर आ रहा है, ये बिहेवियरल चेंजेस के अंदर आ रहा है, ये मेंटर्स के बारे में आ रहा है, ये ड्यूरेशन के बारे में आ रहा है। तो ये सब आएगा, उसके बेसिस पे आप थीम बनाओगे। तो ये सब कोड्स बेस्ड ऑन दैट आई विल प्रिपेयर अ थीम। और अभी इसके बेसिस पे मैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के साथ मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया और मुझे इतने पॉइंट मिले, अभी मुझे 1000 लोगों को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जितने भी पॉइंट ये 10 डिस्कशन में आएंगे उसके बेसिस पे मैं सेक्शन बनाऊंगा। सेक्शन 1 रिगार्डिंग योर मेंटर्स, सेक्शन 2 रिगार्डिंग टॉपिक, सेक्शन 3 रिगार्डिंग ड्यूरेशन, सेक्शन 4 रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग। और इसके अंदर जो जो भी ऑप्शन इसमें आए हैं वो सब मैं क्वेश्चनर में डालूंगा। So this is how we can use a mixed method approach. We have done the focus group discussion. Based on the result of focus group discussion, we are creating a questionnaire which we can use for the larger public. So qualitative part भी हो गया और quantitative part भी हो गया. Is it clear to everyone? Sir, does Yes, this sir. have to follow Yes, followed by a one-to-one interview? Not necessary, sir. So if you are doing a one-to-one interview, it will be known as in-depth interview. So either you can choose in-depth interview or you can choose focus group discussion. So now if we come to your presentation, sir, I would like to say that whatever you have tried to achieve is not possible for duration of the course. Definitely you keep it in your mind, you do it. But if, for example, at the end we say that present one small part of it, so you can only present whatever you have learned in focus group discussion. Otherwise, you take this whole part as an exercise for improvement of the college or institution. But it is not possible to finish in within 1 or 2 months. Okay, sir. So the Secondly, first part, yeah, first part. So now can you share your screen? sir, I have a question, sir. Yeah, please. Sir, in this focus group and individual, first, which one we have to do, sir? Individual or the focus group interviews? Both are separate. You can't do both. दोनों possible नहीं है. Okay. So you have to decide. You have to decide what you want to do. See, if the topic is very sensitive, for example, I am taking an interview of HIV positive person. So person will not open up in focus group discussion because in focus group discussion there will be 10 to 12 people. So person will not open up. So in that case you can go for in-depth interview. 1-to-1. मैं आपसे बात करता हूँ 1 घंटे तक मैं बात कर सकता हूँ, आप ओपन होंगे, ठीक है।
So that you have to decide that which type of qualitative method you want to use. So both are separate So we have and to, both has its own. so we have to choose either one, either focus group or Yes, individual. yes. So in in-depth interview, the advantage is when you are doing in-depth interview, when you take an in-depth interview of 6, 7, 8 people, then you will reach to something known as saturation point. And after that saturation point, no need to go for further in-depth interview. फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोग है, मैं आप सबको पूछ रहा हूँ और 5 नंबर के बाद मुझे पता चल गया सब एक ही बात बोल रहे हैं, सब एक ही बात बोल रहे हैं, तो जब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज फिनिश्ड, nothing is coming new, I will take 2 more interview to prove myself, okay, nothing is coming new, and then I will stop. Okay, so now sir, can you go to previous slide? Aim wali slide, slide of aim. Yes, 4, I think it is 4th number 4. Second is context, I think, and third is the aim and objective. आ गया ना सर? It is introduction. Okay. Yeah, aim of the study. Yes. So when you are presenting a course, this is a multiple study. I can say this is a 3 study. Okay. So keep only one aim. Okay. So aim of the study is to understand, to contribute to and improve, to understand student support needed at my institution. Okay. Aim of the study is to understand student support or to understand students' perspective of student support system existing at my university or at health university. Okay, so that will be only one aim right now. So these all are the different study, and or what you can do, aim of the study is to evaluate student support system at my institute. So that is a single aim, and then other things will come in the objective. Objectives. So your aim is to understand student support system at your institute. All will be objective. Objectives are the point which take you to the aim. तो इसके लिए ये सब आएगा. So what you will do, first objective is to assess the student need. Second, to assess. Second will be to assess their perception regarding existing support system. Third, to investigate the factors affecting use of student support system. So this all will come as an objective, sir. So aim will be single. Okay. Clear, sir? Yes, sir. Yes. So this the question will be framed accordingly. So this will not come in the aim. So yeah. First will be aim and rest will become objective. Objectives. और ये जो आपने लिखा है adequacy of value through the previous data collection stage, the extent to which they are used, and so this all will be become a part of methodology. So with this limited aim, sir, so then methodology may only one focus group discussion will be done. So right now you can just put a focus group discussion at as this point of time. Okay. तो जैसे हमारा यूनिवर्सिटी में 4 फैकल्टी है, चारों फैकल्टी को अलग अलग ग्रुप बना के 4 करना है या एक ही करना है? नहीं, चारों का 4 फैकल्टी अलग अलग है, तो इसलिए आप 4 कर सकते हो, हर एक फैकल्टी में से एक. और एक ग्रुप में कितना होना चाहिए सर मिनिमम? 12 to 15 you can keep. और उसके पहले जैसे हमने डिसाइड किया, you will create an interview guide. Yes. और फोकस ग्रुप डिस्कशन गाइड. ठीक है ना? हाँ, ताकि अंदर प्रोबिंग क्वेश्चन भी आ जाएंगे और we will not miss anything. We can go to the next slide.
सर ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा आपको सपोर्ट भी चाहिए होगा। अकेले तो पॉसिबल आपके को इन्वेस्टिगेटर ज्यादा चाहिए। वैसे आपके लिए पॉसिबल है, बी लुकिंग एट योर पोजीशन यू विल बी एबल टू डू इट सर, बट आपके आईक्यू ऐसी को थोड़ा हैंड होल्डिंग करके दे दीजिए। इसमें एक और चैलेंज है कि हमारा नैक का अभी 2 महीने में इंस्पेक्शन ड्यू है, सो ये मैटर्स वगैरह थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, बट नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो मैनेजमेंट को कि सर ये नैक में दिखाने के लिए कर रहे हैं कि वी आर so much student friendly that we are taking student feedback also for student support, and this is an innovation which will be appreciated by the NAC team, that we are and we everywhere it is a student friendly. दिस विल बी डन इन द ये जो हम कर रहे हैं वो तो एग्जिस्टिंग इसमें नहीं हो रहा है, बट चाहो तो हम दिखा सकते हैं ना सर पीयर टीम विजिट में कि हम ऐसा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, और दूसरा सर, जो प्रीवियस बच्चों से आप कर रहे हैं ना, दिस यू आर डूइंग विद द प्रीवियस स्टूडेंट, एम आई राइट? तो ये तो और ज्यादा अच्छा है। यू कैन टेल दैट वी आर आस्किंग द स्टूडेंट व्हिच आर नॉट फियरिंग आवर इफेक्ट ऑन देम, सो व्हाटएवर रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट विल बी करेक्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ फियर कि मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। नहीं सर, ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है सर, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ही है। ओके, प्रीवियस स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे सर एक बार निकलने के बाद? ओके ओके, ठीक है, मुझे लगा प्रीवियस में करे तो और अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो यू कैन कंसिडर दिस एन एजुकेशनल इनोवेशन प्रोजेक्ट फॉर NAC for university to convince university, because definitely we need to take them into consideration. Okay, just a second. So can you use Dalli. alumni members, sir, to give them and then take the feedback? Is that possible, sir? हाँ, एल्यूमिनी को भी हम ले सकते हैं। तो एल्यूमिनी के अंदर हम जिसको लेंगे, so in that case you have to do telephonic interview. Yes, sir. That can be at least for sir NAC purpose. If you can show that this has already been done and now it is being implemented for the present students, will that be of वो भी any हो सकता है, but yes, that also can be done. Yes, sir. So just to showcase that it is already in place and it is being improvised with student support services, just for the benefit of NAC. It can be. Just a second. Sir, is there any Yeah, protocol for interview guide, sir, to fabricate to make a interview guide? What? Interview guide, sir. Is there any protocol to formulate an interview guide? Just a second, I am not able to hear you. Sir, interview guide, sir. Can you speak again? Sir, is there any protocol to formulate an interview guide? No. I mean, there are miss. You need to be trained, but rather than protocol, you must be clear in your objective. That what you want to get out of your group. Okay. Okay. So here, the first stage will involve the analysis of documentary sources from institution. So, sir, मैं आपको ये पूछ रहा था कि इसके मुताबिक आप ऐसा पूछ रहे हो कि first of all you are going to take a questionnaire type of response from student in this first stage. सर एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेज ये था कि फ्रॉम द प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू सब लेना है, जैसे एलुमनाई सर्विसेज है, स्टूडेंट काउंसिल है, हॉस्टल सर्विसेज है, उनसे हम पता करेंगे कि हमारा सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली क्या है, वो जानने के लिए फर्स्ट स्टेज है। Okay. So this is a background we can say this is a background preparation. ये बैकग्राउंड That you will make yourself aware that क्या actually available है बच्चों को. यस. So in light of this, you can discuss with the student. Okay. So, so sir, consider this as a background preparation, not put it as a first stage. Keep it as a background preparation. Okay. क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टेज बोलोगे तो मुझे ऐसा लगा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आप ये कुछ स्टडी बच्चों से कर रहे हैं.
हाँ नहीं नहीं सर. ओके. नाउ यहाँ पे भी आपने दो वर्ड यूज किए हैं, की इन्फॉर्मेंट. अभी आपको शायद पता है कि नहीं, मुझे आई एम नॉट अवेयर दैट देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म used in qualitative research known as key informant interview. So are you targeting that, or this is just by fluke you have written the word key informants? No sir, it is actually copy paste. Honestly, I really did not. मुझे एक Okay, स्टडी में okay, मिला था, एक स्ट्रक्चर मिला था ऐसे, okay, okay, okay. तो मैंने So डिटेल you में can गया just नहीं. write focus group. Okay. So what you can write, second stage is focus group. बच्चों के साथ करोगे आप. So right now keep it only student. For ठीक है. this CCHP, you keep it with the student. Now what you can do in a next phase, do the focus group discussion of the service provider. ओके. ठीक है. तो अभी आपके पास दो वर्जन आ जाएंगे, एक वर्जन बच्चों का है और एक वर्जन सर्विस प्रोवाइडर का है. तो दोनों का वर्जन से आपको गैप पता चलेगा कि मुझे लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ रेसिडेंट आके बात कर सकते हैं, लेकिन रेसिडेंट को पूछो तो पता चलता है कि ये तो इतना बोगस आदमी है कि इससे मैं मिलने नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये तो डांटता रहता है. So you will come to know the actual gap and then you can able to improve it. Okay. So here focus Yes. group interview with the student. That's it. Okay sir. What you will mention regarding interview guide. Okay. Can we go to the next? Next slide. Sorry. तो No? ये तो Next slide. ये तो करना नहीं है ना सर अभी इसमें, हाँ तो प्रोजेक्ट अभी के आप लिए इसको तो. हम साइड में रखते हैं. हाँ, this will be a next phase. Intermediate term के based on the response received, code, theme जो आपको आ रहा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चनर बनाओगे और फिर सबको पूछोगे पूरी इंस्टीट्यूट में सब बच्चों को. ठीक है ना? ओके. नेक्स्ट. सर ये क्वेश्चनर का भी सर थोड़ा एक डिटेल में क्लास चाहिए सर. वैलिडेशन क्वेश्चनर फ्रेमिंग का. फ्रेमिंग एंड ओके आल्सो ओके. लाइक संध्या मैडम ने बोला कि अभी वैलिडेशन और उसका इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी. हाँ, इंटरनल वैलिडिटी है. तो इंटरनल वैलिडिटी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव क्रोनबेच अल्फा? भूल गए हाउ मेनी सर. ऑफ यू हर्ड? हाँ आई हैव सो हर्ड सर. क्रोनबेच अल्फा इज, हाँ, क्रोनबेच अल्फा इज बेसिकली फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी. फॉर एग्जांपल, अभी हम सेम ही टॉपिक लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑन CCHPE कोर्स, और मैं आप लोगों को मैं 10 क्वेश्चन देता हूं. ठीक है, क्वेश्चन 1 to 10. तो मैं पहले 2-3 लोगों में पायलट करके उसका मैं क्रोनबेच अल्फा निकालूंगा. तो क्रोनबेच अल्फा क्या बोलता है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको 10 दिए हैं वो इंटरनली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, या एक उत्तर जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन दक्षिण जा रहा है, तीसरा नॉर्थ वेस्ट ऐसे जा रहा है. तो वो देखने के लिए जो हम करते हैं दैट इज नोन एज क्रोनबेच अल्फा एंड इंटरफॉल. इट इज फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वेश्चनर. तो दैट आल्सो वी विल डिस्कस sometime. तो फर्स्ट वर्जन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट टू. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द फर्स्ट वर्जन विल बी पायलोटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ग्रुप ऑफ 10 की जगह आप लिख सकते हो कि पायलट टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर विल बी डन एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी विल बी कैलकुलेटेड. तो ठीक है उसमें सर. ये क्रोनबेच अल्फा का कैलकुलेशन इतना अच्छा है कि वो आपको बोलता है कि अभी इसका इंटरनल कंसिस्टेंसी 0.8 है, 1 इज बेस्ड 0.8 है. अगर ये क्वेश्चन आपने निकाल दिया तो वो 0.9 हो जाएगा. तो वो भी आपको बताता है कि ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उसमें से किसको आप निकाल सकते हो. ये स्टैटिस्टिशियन करके देगा सर. हाँ, स्टेटिस्टिशियन भी कर सकता है, और अभी क्या है गूगल है वो सब देता है अपने को. अच्छा अच्छा. गूगल में डेटा डालोगे, वरना स्टेटिस्टिशियन तो दे ही देगा अपने को. हाँ, अभी आप लिमिट मत रखिएगा 10 क्वेश्चंस. यू डोंट लिमिट because based on your focus group discussion you will come to know that what are the themes are coming out, and based on that you are going to create a questionnaire. हाँ हाँ मम्मी.
नंबर ऑफ ट्रायल्स मत कीजिए. सो फर्स्ट इज पायलट टेस्टिंग and second you will go for giving it to the student. But before pilot testing, the number of trial we should not write. We are going to do a validation by Okay. sharing with the student and few of the faculty. And one more question, are you going to use English language only or local language? ठीक है सर, दोनों करना है तो दोनों का which वैलिडेट language? करना पड़ेगा. हाँ. तो लोकल लैंग्वेज है या इंग्लिश है, दैट ऑल्सो यू टू फाइंड आउट. एक ही स्टडी में दोनों यूज कर सकते हैं सर, दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. हाँ हाँ कर सकते हैं. यू कैन पुट ऊपर इंग्लिश नीचे लोकल लैंग्वेज. मैंने जब किया था स्लिप के बारे में तो दोनों लैंग्वेज साथ में रखा था, ऊपर इंग्लिश और नीचे गुजराती. तो जिसको भी जो समझ में आया उसके मुताबिक. और तीसरा क्या किया था कि अभी सर क्या हो रहा है, फ्रेंकली स्पीकिंग ऑल विल एग्री विथ मी दैट गूगल फॉर्म इतना कॉमन हो गया है कि जब गूगल फॉर्म लोगों को देते हैं ना तो लोग उसमें कई बार गलत सलत आंसर भी टिक 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 करके दे देते हैं. तो जब आप कोई भी गूगल फॉर्म दे रहे हो तो बीच में एक टोटली व्हाट वी कैन से इररिलेवेंट क्वेश्चन आप रखो उसमें. फॉर एग्जांपल आप 15 क्वेश्चन रख रहे हो तो उसमें सेंटर ऑफ द क्वेश्चन 8 और 9वां क्वेश्चन टोटली इररिलेवेंट होना चाहिए, जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है. और उसका भी उसने आंसर दे दिया स्ट्रांगली एग्री, मींस आप समझ गए कि उसने सबका स्ट्रांगली एग्री कर दिया है. ठीक है. गूगल these are some of the validation. दूसरा एक मैं आपको बोलता हूं, जब आप गूगल फॉर्म यूज करते हो आप खोलते हो तो 3 चीजें दिखाई देती है सिर्फ इनिशियली. अगर वो स्क्रॉल नहीं करेगा तो फर्स्ट 3 ही दिखेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री और न्यूट्रल. बात का एग्री और स्ट्रांगली एग्री नहीं दिखेगा अगर उसने स्क्रॉल नहीं किया तो. सो नाउ आई एम प्रिफरिंग, if we are doing it as a student, do it in the hard copy rather than soft copy. Or if you are doing in the class, explain them that you can move like this, so you will know all the 5 options. points. Yeah, options. Okay, good. Can you go to the next slide? Chinmay sir, I have a query. Sir, in Yeah, bolo. Padilla sir's case, since all our students, is it required to go for the local language? Because the medium of instruction is English only, no? Yeah, that is perfectly all right. But the thing is, when you want real thing, see, बच्चा नहीं बोलने वाला है कि मुझे गुजराती में हिंदी में पढ़ाओ, क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ाओगे पढ़ लेगा. लेकिन अगर सब बोलते हैं that you have to decide, it is not 100% require a local language, but if you think it is required, you give it. Or what you can do, if you think that only 10% student require a support, so in that case what you do, you go into the class, open the questionnaire, explain all the questions for 15 minutes and then give Google form to the student that they have understood properly to answer it. So that is the second option. There is no necessary to do the translated question, but they should know that what this question is wanting to ask you. Okay. Sir, next slide. Next slide. Okay. So ये भी रिवाइज करना पड़ेगा सर, इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क को भी. ठीक है. Okay. Now, who is any questions to anyone? सर ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर मेनली इसमें? हाँ, देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर यूजुअली एन ऑब्जेक्टिव विच लीड्स यू टू द एम. तो अभी हमने सर का एम क्या बनाया? सर का एम हमने बनाया टू नो द स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम एट हेल्थ यूनिवर्सिटी और एट आवर इंस्टीट्यूशन. ये हमारा एम है, टू नो द स्टेटस ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट. तो वो जानने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा?
एक तो बच्चों को पता है कि नहीं वो जानना पड़ेगा। दूसरा, सो दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू नो द रीजंस ऑफ नॉट यूजिंग द सिस्टम, एंड थर्ड, any other confounding factor which is affecting use of student support. So ये सब ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ये सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं कि जो अपने को वहां तक ले जा रहा है। अभी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे कि इसमें से ऐसे ही निकलेंगे बाहर, जिसके लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें से ऐसे ही निकल के बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ रिकमेंडेशन given to the university for improvement in student support. So that will be a secondary objective कि उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन करते करते ही हो जाएगा। So that all will become secondary objective. ठीक है? यस। और इंडिकेटर्स कैसे करेंगे सर इसमें? इंडिकेटर्स की इंडिकेटर मतलब जैसे हमको ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, वो मेजर हाँ। करने का क्या कर सकते हैं सर इसमें? हाँ, अभी कौन बताएगा? चलो इसका इंडिकेटर क्या क्या रहेंगे? यस, गुड क्वेश्चन। अपने जो मैट्रिक्स, इसलिए एक्सेलेंट मैट्रिक्स है कि हम कभी कुछ भूल नहीं सकते या कुछ मिस नहीं करेंगे। इसके इंडिकेटर क्या क्या रहेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग लाइब्रेरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग दिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग दिस। अभी जब आप फोकस ग्रुप डिस्कशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस आर द पॉइंट्स व्हिच आर हिंडरिंग द यूज ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट not using student support system because of timing problem, because of language problem, because of fees, because of 1 2 3 reason. So that all will become indicator. Okay, और अगर हम descriptive और analytic study में जाए तो this is more of descriptive study. So whatever indicator will come will give you a percentage that ये percentage में ये हो रहा है, ये percentage में ये हो रहा है, ये percentage में ये हो रहा है। Okay, so these all are your indicator. ठीक है? Anything else or any other question or anything you want to add? See, I always ask that this is always co-learning. If any one of you want to add anything or suggest anything, you are most welcome, please. इसके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी कैसे हो सकता है सर? सपोज व्हाट आर द डाटा यू गेट एंड ऑल, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फिर कैसे रहेगा सर? Implementation of what? Implementation of what? ये प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन या स्टूडेंट सपोर्ट का? यस सर। किसका? आप implementation of what you are asking? One is More this question clarify. sir has mentioned now that it will be done in-house in the college only, or maybe within that university. Suppose if the same has to be implemented outside or something like that. Yeah. So number one, first of all, we can use the word generalizability of this question. What you are asking implementation outside the institution, तो उसमें आपको 2-3 पॉइंट देखने पड़ेंगे। That is it worth? Because जो स्टूडेंट सिस्टम उनके यूनिवर्सिटी में मिल रहा है वो मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है, तो इनिशियली आई कांट जनरलाइज द सेम क्वेश्चन। ओके, it is not possible to generalize the same because whatever student support system I have in my college is different than what you have in your college. So it is ideal case not possible to generalize it. Secondly, implementation of student support will be done based on the feedback which sir will get in this interview or focus group. ठीक है? So these are two different things and it will need more further discussion and elaboration and felt need. जो करिकुलम का जो कंस के 6 स्टेप है ना, उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो हमको फिर से सोचना पड़ेगा कि फेल्ट नीड क्या है, बच्चों को चाहिए क्या। ये फोकस ग्रुप डिस्कशन से ये भी पता चलेगा, तो उसके मुताबिक यू इम्प्लीमेंट द स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। कई बार हमको लगता है कि बच्चों को ये जरूरत है, ये जरूरत है, बच्चों को जरूरत ही नहीं होती है, हम बेकार में देते रहते हैं क्योंकि हमको नहीं मिला था, हमको लगता है बच्चों को जरूरत है। घर में भी होता है ना,
Sir, one big example is library. बच्चों का भी library नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए सर, जाते भी नहीं सर अभी। अभी मैं एक हमारी बात बोल रहा हूँ. Actually, right now in whatever place I am sitting, may fall any time, any day, anytime this can fall. अभी हमारी कॉलेज का ऐसा है. तो एक साल से ये सब डिस्कशन चल रहा है. तो बच्चों को बोला कि आपको क्या चाहिए. बच्चों को ना तो लेक्चर हॉल चाहिए, ना तो एग्जाम हॉल चाहिए, ना तो कैंटीन चाहिए. क्या सर, हमको रीडिंग रूम मिलना चाहिए, बात खत्म. और किसी के साथ उनको कुछ लेना देना नहीं है. सो दैट इज अ फैक्ट एंड दैट विल आल्सो कम आउट फ्रॉम दिस exercise what sir is doing. Okay, so any more questions regarding sir's point or methodology? Sir, one point which I read about qualitative research is that the findings of this research cannot be applied to the generalizing to the population. Like you said, the Yes. results of my study may not be applicable to another college. डेफिनेटली. तो वही अभी जब डॉक्टर आनंद ने पूछा कि हाउ आई कैन इंप्लीमेंट दिस सेम क्वेश्चन टू मेडिकल कॉलेज भावनगर, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो लोकल लोगों का फीडबैक है. तो यू कांट जनरलाइज. अगर आपको जनरलाइज करना है तो कैसे कर सकोगे. फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कोई क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि फैकल्टी परसेप्शन रिगार्डिंग डीसीआई करिकुलम. आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइटल है फैकल्टी परसेप्शन रिगार्डिंग डीसीआई करिकुलम. तो और आपने ये 10 लोगों को लिया जो अलग अलग जगह से है. एक गुजरात से है, एक महाराष्ट्र से है, एक दिल्ली से है, एक. तो वो अगर आपका एरिया बड़ा हो गया तो वो एरिया में आप जनरलाइज कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते. ठीक है ना सर? Okay, sir. Okay, so who is presenting next? Sir, I'll be presenting. Yeah, okay ma'am. Ma'am, sir, I'm just trying to share. If you don't be share, kindly somebody else share the screen for me because I have posted in the WhatsApp. We can see now. Yes, sir. Is it visible, sir? Full screen? Yes, 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 yes. नहीं, फुल स्क्रीन नहीं है, अभी आएगा. एक हमको वेबएक्स में ये याद रखना पड़ेगा कि because of the security and everything, it will take a lag of 4 to 5 seconds. So once you will project it, it will take some time to reach to us. क्योंकि सर मेरा हमेशा से ना फुल स्क्रीन नहीं आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि पूछूंगा. ओके, तो इसकी वजह एक ये हो सकती है मैडम, आप शेयर करके क्या शेयर कर रहे हो, शेयर स्क्रीन करते हो या शेयर विंडो करते हो? शेयर विंडो करती हूँ सर. इसलिए आप इसको रिमूव करो और शेयर स्क्रीन करो, डायरेक्ट होल स्क्रीन शेयर करो तो आ जाएगा. स्क्रीन करो. ओके सर. पहले इसको ऑन शेयर कर दो, आप पहले ऑन शेयर कर दो. हाँ हाँ. अभी आप गो टू शेयर एंड पुट. ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ सर. एंटायर स्क्रीन करने से तो सर कुछ नहीं आता है. हाँ, करो करो, एंटर स्क्रीन करो. कर दिया सर. वो ऑप्शन नहीं दिखा हाँ, रहा अभी है. उसको अभी नहीं अभी नहीं हुआ है, स्टिल नहीं हुआ है. सर मैंने एंटर ओके प्रेस करना पड़ेगा. ओके एंटर नहीं हो स्क्रीन करने के बाद नीचे आपको वो शेयर वाला ऑप्शन इनविजिबल आ रहा है सर. कोई बात नहीं, तो आप विंडो करो और विदाउट फुल स्क्रीन चलेगा. आप बाद में कभी ट्राई करना. तो एंटर स्क्रीन करते हैं तो फायदा ये होता है कि हमारे लैपटॉप में हम जो भी करते हैं वो सब दिखता है. ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सर एक मिनट, मैंने इसमें
सर आपको ये आ रहा है पूरा मैंने जो शेयर किया? फर्स्ट स्लाइड दिख रही है अभी हमको। हाँ हाँ, okay sir. So my topic is DOPS as an assessment tool for the postgraduate residents in the Department of Prosthodontic. This is a pilot study and under the guidance of Nagda ma'am and Chinmay sir. So what is the theory of change? Under this comes the rationale why this intervention is needed. आपने नेक्स्ट स्लाइड किया? नीचे आपको क्लिक करना पड़ेगा तो हमको हाँ सर, मैंने दिखेगा, click किया वरना ना। नहीं आ रहा। थियरी नहीं आ रहा है सर, एक मिनट सर, यही सर मेरे साथ हो रहा है प्रॉब्लम में। एक काम करते हैं, शांति से अभी अभी देखिए सर, फिर से आप अभी ऑन हुआ शेयर क्या? करो। अब आ गया नहीं हुआ? आया? हाँ, आ आया गया आ सर। गया आ गया। चलो ओके, कंटिन्यू सर अभी आया क्या? कंटिन्यू। रैशनल वाला चीज आया? ओके हाँ 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 हाँ। हाँ, so why this intervention is needed? The clinical assessment of the postgraduate trainee is a routine practice in the postgraduate training. However, the assessors simply assign the grade to the trainee. Direct observation procedural skill. This is a workplace-based assessment tool with the predefined checklist criteria for the standardization of the assessment. Now, this is a formative assessment tool and it gives immediate structured feedback to the postgraduate trainee. So this helps to understand their strength and the area of improvement that helps in making the correction in their technique and the approach. Now, what is the problem in the routine procedure? In the routine procedure, as I told, simply grades are assigned by the assessor. So this doesn't allow the PG trainee to understand their strength, area of improvement, and to make correction in their technique. What is the context? The prosthodontic residents have a summative assessment program at the end of the course, that is at the end of the 3 years program. So this doesn't give a scope for the improvement of the PG trainee, whatever mistake they are doing in the clinical procedure. In the end of 3 years, we are just giving a verdict or a grading system. So in between, the student doesn't have the scope for improvement. So standardization, structured workplace-based assessment is the need of the hour. This will help the postgraduate resident to take remedial action well in time. They can utilize the feedback given by the assessors and can improve their program, improve the clinical skill from time to time. Now, who are the stakeholders here? The postgraduate trainee, the assessor, as well as the patients. Now, what are the outcomes? If I see the outcomes, the short, intermediate, and long-term outcomes I have listed here. So the short-term outcomes are the immediate feedback is given, which leads to, which helps in progress, which helps in the tracking the progress of the postgraduate trainee. So there is a validation in the performance of the student. It also helps in the skill identification where the postgraduate students are lacking. So if the assessor gives their feedback, it helps in the refinement of the technical skill, resulting in the complete development of the student. As this is a formative assessment, so effective feedback, if it is incorporated, whatever feedback has been given by the assessor, if it is incorporated, this will lead to the gradual development of the postgraduate trainee. And apart from improving the postgraduate training's clinical skill, it will lead to the patient safety. Apart from the clinical skill, the assessors are also able to identify the communication skills of the postgraduate students with the patient. Now, this helps in identification of the persistent issue and I help think in. Yes, sir. just 1 second, ma'am. Everybody are able to see rational slide or are able to see the other slides? The Rational rational slide. slide only. We all are able to see the rational skill slide only. Can you go down? On which slide you are speaking? It is rational now. So now it is. It is rational A. Okay. Sir, can somebody share for me from the WhatsApp, sir? Every time I am facing this problem. नहीं, हम एक काम करते हैं, आज आपसे ही करवाते हैं। आपको अनशेयर करो इसको। Let's do it today. सर मैं हमेशा ना डिस्करेज हो जाती हूँ इस चीज से ना, हो नहीं रहा है। नहीं, आज हम करेंगे, आपसे ही करवाएंगे। सर इसमें और एक चीज है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट इमेजेस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मोशन एंड वीडियो, उसको कुछ करना है क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज ही है। आप स्क्रीन पे जाओ, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, आप बोलो। शेयर पे जाओ, क्या ऑप्शन आ रहा है आपको? शेयर पे मेरे को सर ऑप्शन आया क्रोम टैब, विंडो एंड एंटायर स्क्रीन।
एंटर स्क्रीन पे क्लिक करो। एंटर स्क्रीन करने से ना सर मेरे को खाली, अच्छा खाली आप लोगों का आ रहा है। हाँ बस बोले भले ही चलेगा। हाँ हम सब जो वही आपको दिखेगा जो आप दिख रहे हैं। हाँ अभी क्या करूँ सर? हाँ बस बढ़िया हो गया। चलो अभी आपका पीपीटी खोलो। बस आपको यही करना है हर बार। पीपीटी को आप ओपन करो अभी। सर अभी हुआ? हाँ खुल गया। हाँ हाँ हो गया। अभी फ्रॉम बिगिनिंग करो। स्लाइड सर आई हैव स्लाइड शो फ्रॉम अचीव्ड इट बिगिनिंग। टुडे। ओके फ्रॉम बिगिनिंग क्लिक करो। स्लाइड शो पे ही चले जाओ। अभी सब कुछ हो जाएगा। सर हुआ क्या? आई थिंक वी विल वेट फॉर फ्यू सेकंड बिफोर। हाँ हो गया। हो गया, हो गया। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay. Sir, should I read all these things or directly I'll go to the outcomes? No, go to next. Reach to whatever place you were. आगे आके Okay, स्लाइड okay. करते जाइए। नेक्स्ट Okay. So, is it visible now, गया। sir? Yeah. हाँ So, रेशनल तक पहुंच गए हम। हाँ जी सर। सर outcomes आया आउटकम भी कि नहीं? गया। हाँ आया Okay. आउटकम आया। हाँ. So these are my अभी आपको पार्टी outcomes. देनी पड़ेगी। So these are the short-term, intermediate, and long-term outcomes. The short-term outcomes is immediate feedback is being given by. Sorry. हाँ विजिबल। Yeah, as immediate feedback is been given by the assessor. This helps in tracking the progress of the postgraduate students, leading to the performance validation. The assessors are able to identify in which skill aspect in the clinical procedure the postgraduate student is lacking. So this helps in the refinement of the technical skills, leading to overall clinical development of the student. As this is a formative assessment, effective feedback is giving to the postgraduate student by the assessors. So if the student will be able to incorporate those feedbacks in the clinical skill, you will definitely improve in the procedure, and overall this will, in the long term, this will lead to the safety of the patient. Apart from the clinical skill, the assessor also observe how the postgraduate student is able to communicate with the patient. So if there is any issue in the communication, they are able to identify it, and improving this lacunae will help in the adaptability to evolving practices. The student will gradually improve. And then another short-term outcome is adaptation to the feedback, which in long term will lead to the enhanced technical skills. So far it is okay. अभी हाँ. हाँ ना अभी आप यहाँ पे स्लाइड पे रुक जाइए। अभी हाँ जी. हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म की अभी बात नहीं करते हैं। ओके सर. ठीक है। राइट नाउ वी विल फोकस ऑन ओनली शॉर्ट टर्म आउटकम। तो आपने बोला इमीडिएट फीडबैक, तो ये सब में आपको टारगेट ऑडियंस लिखना पड़ेगा। इमीडिएट फीडबैक टू हुम? अच्छा हाँ इमीडिएट अच्छा मुझे सर व्हाट यू हाँ सो यू हैव टू राइट अ सेंटेंस इन अ वे दैट द पर्सन हु इज रीडिंग इट विल मेक आउट दैट व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म आउटकम। ओके 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 सर। एक्चुअली टेबल फॉर्मेट में था करके ना मैंने खाली कीवर्ड्स लिखा था कि जगह नहीं होगी करके। तो आई विल राइट डाउन द फुल थिंग्स। हाँ कि इमीडिएट फीडबैक टू द रेसिडेंट डॉक्टर्स, देन स्किल आइडेंटिफिकेशन बाय जो भी है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, लेकिन पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। ओके 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 सर। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सर लिटरेचर रिव्यू मैंने स्किप किया है, उसमें नहीं दिया है। उसको छोड़ दो। हाँ स्किप कर दो। मेथोडोलॉजी में अब चले जाते हैं हम। हाँ एम और एम में इसको छोड़ दो। जो फॉर्मेट एम में चले जाओ। हाँ सर एम तो नहीं लिखा है। व्हाट इज नोन अबाउट दिस टॉपिक, गैप्स एंड लिमिटेशंस ये लिखा है। फिर सिमिलर स्टडी, फिर हाउ इज योर प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, व्हाटएवर इज ओके या। So DOPS provides an authentic assessment method for the procedural skill rather than the written or simulated exams. DOPS also provide immediate feedback for the procedural skills. DOPS is able to identify the specific areas where the student may need additional training or support. Also, it is a standardized procedure for consistency in the evaluation. Suppose 3 or 4 assessors are evaluating a single student, so there will be a consistency present because this is a standardized form. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म बोल सकते हैं ना सर? इंटर रेटर रिलायबिलिटी विल बी मोर। ओके 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 सर।
क्या है, व्हेन वी वांट टू पब्लिश एट सम हायर लेवल, हमको ये बड़े बड़े वर्ड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है सर, ठीक है। So DOPS can also be used longitudinally, allowing the assessors to track the students' progress for long-term Okay. studies. Now regarding this slide, any comments? See, we are also learning the presentation skill also. So see, anybody has any comment? Otherwise then afterwards I will tell. So maybe some reference can be, she could have shared some reference. Reference can be added. Okay, that can be done in any of the presentation. Okay, anything else? So how The this project is different from the other DOPS studies? has is been already used in done. every line. Sorry? Yes. How Yeah. the project, DOPS provides DOPS identify DOP, ये सब में आ रहा है. So we can have a first Okay, line. How is your project new or different? Directly observe professional skills. ये पहले लाइन में लिख के, जैसे हम MCQ में बोलते हैं ना कि जो कॉमन है Okay, वो sir. ऊपर ले लेंगे. So for presentation हाँ, it will be better. The person who is listening it when you are presenting it to your ethics committee, it will be good. Okay. Okay. Provides Okay. immediate feedback. Sir, why I इतना wrote ही, DOPS ठीक है? why I wrote DOPS every time is that whenever we are writing an article, 3-4 times this happened to me, sir. If I miss those words, na, it will specifically ask in the query that Okay. that particular word is Okay. missing. So that's why I thought that I should incorporate it. So Okay, you sir, make I'll one take line. care. हाँ ना, Okay. yeah. Hey, this is for in general. See, I again would like to say to everybody that presentation किसी का भी हो, कुछ भी हो, whatever we are learning, मेरे से भी हो सकता है, किसी के भी. So don't take it like that why it has happened with me, but it is for general understanding of all of us. Okay, okay. And this is the concept map, sir. Okay. Should I read it again? आ or रहा is है. it- No. Methodology. Okay. This is the indicator matrix. आ रहा है. Okay, इस पे हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं. तो इंडिकेटर क्या है आपके? Like for the short-term outcomes, sir, immediate feedback. So evaluation question. Okay. अच्छा सर. तो सर ये अभी हुआ नहीं ना, तो इसीलिए मैंने लिखा नहीं उसमें. नहीं, फिर भी आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? फॉर एग्जांपल देखो, इस पे हम इन जनरल डिस्कशन करते हैं कि इमीडिएट फीडबैक. शॉर्ट टर्म आपका क्या था कि इमीडिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट, रेसिडेंट डॉक्टर्स, है ना? ये आपका है ना शॉर्ट टर्म आउटकम. तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव्ड immediate feedback for their procedural skill. Okay, how many students received? Okay. तो इंडिकेटर क्या होगा? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग feedback. Okay. ठीक है. Okay, sir. सर बाकी सब में सिमिलरली अभी आप हाँ बाकी सब में एक के बाद स्किल आइडेंटिफिकेशन में पूरा सेंटेंस क्या है आपका? assessors are able to identify the clinical skill of the PG students. मतलब अच्छी वाली या गलती वाली? सर गलती वाली. कौन सा छोड़ रहा है? गैप. Okay, so lacunae in a skill will be identified by the assessor. Am I framing correct? Yes, sir. सर फिर से बोलिए. Lacunae. Lacunae in the skill will be identified by the assessor. सर इसमें इंडिकेटर क्या आएगा फिर? हाँ बस इस तो पहले क्वेश्चन में हम जाएंगे that how many student having a lacunae in their skill. Sir, I'm just writing it. Or- Give me one. How many students are identified for the lacunae? Yes. For a specific skill. अगर आप 4 स्किल के लिए ये कर रहे हो DOAP, तो चारों का जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आएगा वो इंडिकेटर होगा कि इतने लोगों को
का स्किल आइडेंटिफिकेशन हुआ। ठीक है सर, ठीक है। फिर वही फॉर्मेटिव नेक्स्ट है, असेसमेंट में भी वही, हाँ फॉर्मेटिव नहीं अभी असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, फॉर्मेटिव, हाँ वेदर द असेसमेंट, आपका आउटकम क्या है? सर एक मिनट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में सर था रिफाइनमेंट ऑफ द टेक्निकल स्किल। अगर तुमने उसको फॉर्मेटिव वे में असेसमेंट ले रहे हैं तो उससे ये होगा कि टेक्निकल स्किल स्टूडेंट का रिफाइनमेंट हो जाएगा आगे चल के, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर वाइज उसका बताया कि उसका कहाँ पे लैक्यूना है और कौन सी जगह पे उसको पिन पॉइंट किया हमने। मान लीजिए कि मैं आपको Okay. बोलूंगी कि आपका स्किल आपने ये ठीक से नहीं किया, वैसे करने के बजाय मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि आपने कहाँ से ठीक किया, कहाँ से नहीं किया, पूरा उसको बताया। तो he is being appreciated for Okay. whatever good he has done, and he is being criticized for whatever uh, he is being informed about the तो thing he has एक्चुअली, not done. हाँ तो एक्चुअली इट इज मर्जिंग विद द फर्स्ट, दैट फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया, इट मींस दैट पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक विल बी गिवन टू द स्टूडेंट। ओके, हाँ तो both अगर sir. अभी तक आपके वहां पे फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं हो रहा है और आप ये हाँ, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, देन यू कैन राइट परसेंटेज ऑफ रेसिडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरगोन DOAP evaluation question, that how many student has undergone formative assessment using DOAP, indicator आएगा percent of trainee assessed for formative assessment. How many students have undergone formative assessment using DOP? Assessment using DOAP. Okay. सर इसमें पास और फेल भी कर सकते हैं क्या? नहीं वो सर हमारा क्राइटेरिया नहीं है अभी, ये प्रोजेक्ट के लिए। रिजल्ट में पास और फेल आ सकता है, लेकिन प्रोजेक्ट में हम क्या चाहते हैं कि अभी तक फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता था, तो अभी ये करने के बाद हमने 10 लोगों का में से 5 लोगों का फॉर्मेटिव असेसमेंट किया। आप पास और फेल कोई भी बोल रहे हो, लेकिन एज यू आर यूजिंग इट एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यू आर गोइंग टू गिव द फीडबैक। जो अभी तक हम कुछ नहीं देते थे वो अभी हम दे रहे हैं। Okay, sir. Then communication skills, sir. For this, whether the student अभी was इसमें आप क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने पेशेंट के साथ क्लिनिकल प्रोसीजर के लिए ठीक से कम्युनिकेट करके उसको कंफर्टेबल कराया कि नहीं कराया। तो अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैक्यूना और आइडेंटिफिकेशन ऑफ appropriateness of communication skill. Short term outcome is identification of appropriate use of appropriate communication skill, और ये आएगा ग्रामेटिकली आपको थोड़ा देख लेना। ओके सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्किल। ओके, यूज, तो हाउ मेनी ट्रेनी कम्युनिकेट विद द पेशेंट प्रॉपरली, कम्युनिकेट तो करेंगे लेकिन प्रॉपरली, एप्रोप्रिएटली। तो लास्ट वाला आएगा कि नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा आपका शॉर्ट टर्म आउटकम। हाँ सर, मैं भी थोड़ा सा डाइसी में हूँ, अडॉप्टेशन टू द फीडबैक। स्टूडेंट ने हमने जो असेसर ने जो, हाँ आप डॉग्स की 1 साइकिल करने वाले हैं या 2-3 साइकिल करने वाले हैं? सर मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि अगर हमारा ये कोर्स जब तक फिनिश होगा, मान लीजिए कि मैंने 9 PG स्टूडेंट्स हैं, तो उनको वो भी सर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मैं कितने बार ये कर सकती हूँ उसको ना। श्योर। अगर आप दूसरी बार कर रहे हो तो इन सेकंड टाइम दिस में बी योर आउटकम, कि लास्ट टाइम आपने जो फीडबैक दिया था उसको फॉलो किया कि नहीं। हाँ, और सर अगर मैंने आपको अभी प्रोसीजर में मैं डिस्कस करूंगी कि मान लीजिए मैंने अगर एक स्टूडेंट को असेस किया यूजिंग द डॉप्स फॉर्म, तो सेकंड टाइम सेम स्टूडेंट को आफ्टर 1 मंथ आई विल बी असेसिंग, और कोई और अगर असेस करता है तो चलेगा। कोई अगर आपके पास चेकलिस्ट है, आपने बोला कि यू आर गोइंग टू असेस बेस्ड ऑन द चेकलिस्ट, तो कोई और भी कर सकता है। ओके सर, ओके, तो वो सेम ही काउंटेड किया जाएगा ना। हाँ ओके सर, शुड आई गो टू सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड? यस Ma'am, I have a question, ma'am. Yeah. Ma'am, you will be assessing for individual step or in all? No. As in one Right now, I have taken because I don't know. This will be total mess. So I have taken right now
the primary impression for the Yes, complete denture. Okay. Okay, I have taken only Not one all step. the steps in one No, no, treatment. no, no, no. I thought that it will be a total mess. If I'll be successful in that, gradually, I will incorporate other things also. That's what I am thinking. Suppose I'll be starting now and won't be able to complete the thing before this our course is over, then I'll be in soup. So that's why. So should I move to next slide? Yes, 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 Okay. yes, Now yes. regarding the methodology and Gantt chart, for the timings, though it can be used as a longitudinal study, I have kept it as a cross-sectional study for now. The study location will be in the Department of Prosthodontics. I have kept common Department of Prosthodontics because if it will be applicable to other colleges, then it will be I'll be involving the multiple colleges. For the time being, I have involved only my college only. So the participants will be the postgraduate students. There will be 9 in number because in each batch there are 3 PG students in my college. So total number of students are 9. And regarding the assessors, I have kept 6. How do you suggest it to happen? Suppose 9 are present. Can I take 3 assessors? Will that be okay? हाँ, Or लेकिन Ajmal, सब SSR, all SSR should be trained, so there should yes, not sir. be an inter-rater reliability, variability. हाँ 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 सर इसमें सर मैं अगर ज्यादा असेसर रखूं तो उससे क्या होगा ना मुझे हैंडल करने के लिए इजी होगा तो मान लीजिए कि मैंने नंबर ऑफ केसेस एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ने सपोज मान लीजिए सेम प्रोसीजर को 6 टाइम करेगा क्योंकि अगर 6 Again, असेसर ने again, उसको repeat. सर मेरी बात सुनिए सपोज एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को मैंने असेस किया इन ईच मंथ है ना तो ये प्रोसीजर खत्म होते होते मुझे 6 मंथ लगेंगे लेकिन क्योंकि मेरा कोर्स का टेन्योर छोटा है मान लीजिए कि मैंने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को आज मैंने ऑब्जर्व किया 15 डेज के बाद या 7 डेज के बाद वो वाला फीडबैक यूज करके किसी दूसरे असेसर ने उसको फिर से उसी प्रोसीजर के लिए उसको एग्जामिन किया हाँ, चल सकता है. हाँ वो चल सकता है क्या मैं यही पूछ रही हूँ हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, क्योंकि सर चेकलिस्ट है और समझ उसको गए पता हाँ होना चाहिए आपने हाँ क्या फीडबैक दिया वो उसको पता होना चाहिए. हाँ सपोज मैंने सर एक फीडबैक उसको दिया तो उसने उसमें इम्प्रूवमेंट किया कि नहीं जो अगला असेसर आएगा वो उसको 7 डेज के बाद फिर से असेस करेगा एक दूसरे पेशेंट के लिए तो उसको पता चलेगा ना कि उसने अपना वाला फीडबैक को लिया है कि इनटू कंसिडरेशन कि नहीं लिया है बस बस वही, द मेन ओनली की पॉइंट इज he should be or she should be aware of what feedback you have given. हाँ हाँ सो सर उसके लिए हाँ Otherwise, तो उसको वो पता होना चाहिए वो तो हम उसको फॉर्म दिखाएंगे ना सर उसको कि हमने ये फीडबैक दिया है करके श्योर चलेगा. हाँ तो ये सर मैंने रखा है देखो, असेसर का नंबर हाँ आइडियल केस में तो ऐसा है कि आप ही उसका करें तो आपको अच्छा पता चलेगा, लेकिन अगर अपने को फिजिबिलिटी नहीं है देन वी हाँ कैन चेंज द ऑब्जर्वर, बट इन आइडियल केस इफ यू डू इट इज गुड, अदरवाइज इट विल बी ओके. अगर सर मैंने 6 असेसर रखा मैंने नागदा मैम से बात किया था इनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको ट्रेन करने के लिए तो स्टूडेंट्स एज वेल एज द असेसर्स सो सर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें मैं नंबर ऑफ असेसर 6 रखने से बेटर रहेगा कि मैं 3 रखूं नहीं, अगर 6 है आपके पास तो हाँ है रखो, सर तो अच्छा ये रहेगा. हाँ, देन यू कैन कीप इट, तो अच्छा ये रहेगा कि उनको पता है और सबके पास एक एक स्टूडेंट ही आएंगे या 1.5 स्टूडेंट या ऐसा ही आएगा तो अच्छा रहेगा. ठीक है सर ओके तो ये सर नेक्स्ट ये कि व्हाई आई हैव टेकन दिस प्रोसीजर इनटू अकाउंट फॉर दिस प्रोजेक्ट उसमें सर ये कि हम इडेंचुलस पेशेंट जो होते हैं उनको कंप्लीट डेंचर देते हैं तो मैं कंप्लीट डेंचर देने से पहले उनका एक मेजरमेंट लेते हैं जैसे आप ड्रेस बनाते हैं एक मेजरमेंट लेते हैं वैसे कंप्लीट डेंचर बनाने के लिए मेजरमेंट लेते हैं तो डिफरेंट मेजरमेंट होता है जो फर्स्ट वाला मेजरमेंट है आई हैव टेकन दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन प्राइमरी इंप्रेशन फॉर द कंप्लीट डेंचर पेशेंट्स और इसको मैंने क्यों लिया क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं ना सर आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग जब उनका फाइनल ईयर का एग्जाम होता है उनको इसमें प्राइमरी इंप्रेशन का पूरा क्लिनिकल एग्जाम देना पड़ता है सो अगर कोई स्टूडेंट पीजी में आ रहा है तो इट इज कंसिडर्ड कि वो स्टूडेंट ने अंडर ग्रेजुएट में डेफिनेटली वो वाला ट्रेनिंग लिया है प्राइमरी इंप्रेशन का लिया. तो उसमें क्या होगा ना कि सर मैंने क्यों इसको लिया क्योंकि अगर मैं डॉप्स का असेसमेंट ले रहा हूँ तो उसमें मुझे पेशेंट स्टूडेंट को मुझे ट्रेन करना पड़ेगा कि आफ्टर ट्रेनिंग उसका कितना इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पे क्या है ना क्योंकि उस प्रोसीजर के साथ ऑलरेडी वो फाइनल बीडीएस का एग्जाम दे चुका है अकॉर्डिंग टू द डेंटल
जो DCI का करिकुलम है अपना, तो उसके हिसाब से मैंडेटरी है कि आपको फाइनल ईयर एग्जाम में प्राइमरी इम्प्रेशन लेना है कॉम्पिटेंचर का। तो उसके समेटिव एग्जाम्स वो दे चुका है, तो क्योंकि वो समेटिव एग्जाम्स दे चुका है इसीलिए सेम प्रोसीजर को मैंने लिया है डॉप्स फॉर्मेट के लिए, कि तुमने इसको बरोबर है। समेटिव दिया है तो, लेकिन अभी मैं इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में असेस करूंगी कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। अदरवाइज क्या होगा ना सर, Perfect. मेरे क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट्स लिया है फर्स्ट ईयर पीजी स्टूडेंट, सेकंड ईयर पीजी स्टूडेंट और थर्ड ईयर पीजी स्टूडेंट, तो उसमें एक क्वेश्चन मैम ने किया था कि फर्स्ट ईयर बच्चे का स्किल और फाइनल ईयर जो पीजी है उसका स्किल डेफिनेटली वैरी करेगा, लेकिन मैंने जो प्रोसीजर चूज नहीं नहीं, किया वो तो आपका अंडर भी ग्रेजुएट। नहीं ठीक है, क्योंकि सब पीजी है, सब एक लेवल पे है, तो आपको हाँ असेसमेंट करने में भी अच्छा रहेगा और हाँ स्टडी रिजल्ट लिखने के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ सर। So initiation will be of the study will be done after the ethical committee approval. Now, ओके, for the sir, next slide has come. आई थिंक ऑन द वे। Okay, sir. आने दीजिए। आपके वहां पे हो गई है चेंज? मेरे हो गया सर, आपके देखिए हुआ है कि नहीं? अभी आ रहा है आई थिंक। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है, तो थोड़ा देर लग रहा है। अभी तक क्यों नहीं आया? आया सर? नहीं, अभी मुझे वो गाना गाने का मन हो रहा है। बड़ी देर भाई नंदलाल है ना वो गाना। It has come. Okay. हाँ, आ गया। हाँ हाँ sir, the project will be explained to the participants, that is the faculty, 6 faculties, as well as 9 PG students, and a video conferencing will be done. I have discussed with Naga ma'am, so a video conferencing will be done to train the assessor as well as the students for the DOPS procedure. And now after that program, a written consent will be taken from the participant whether they are giving the consent to participate in the project or not. Once they have given the consent, then the orientation of the faculty as well as the postgraduate students will be done for to know about the concept of DOPS and the skill regarding giving the constructive feedback form on the intervention. After that, a video demonstration will also be used for the same purpose. कि मैम के अभी साथ आपने ये उनको कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए आपने ये कॉपी मैंने पेस्ट कॉपी किया है पेस्ट कहीं से, इसलिए वॉज आ रहा है। हाँ, इसलिए वॉज आ रहा है कि आपने कर दिया है। क्या आ रहा है सर? वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन वॉज यूज्ड फॉर पर्पस, विल भी आएगा ना? अच्छा, अभी करेंगे ना हाँ कि हो गया है? नहीं नहीं सर, अच्छा मैंने वो कर एक्चुअली सर करना है सर, करना है, दिस विल बी डन। होता है, चलो ओके आगे। Okay, so for the generation of the valid checklist for DOPS, the generic DOPS form will be taken. And now, after taking the generic DOPS form, the identification of the competency required to perform the primary impression making procedure for the competentors will be identified. That on which points I will be focusing, that points will be identified. Accordingly, the specific learning objectives or SLO will be prepared. Now, after the SLO are prepared, a checklist for the doc form will be generated. After the modified docs form is generated, then it will be validated by the peers and the senior faculty members. Once it is validated by the peers and the senior faculty members, it will be used for the pilot testing purpose. Now, sir, has the slide come? प्री वैलिडेटेड बाय पीयर्स एंड सीनियर फैकल्टी है। हाँ हाँ आएगा सर। आएगा। हाँ ठीक है, प्री वैलिडेशन हो गया और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट। okay. Then what will be the observation period for a trainee? A total 6 क्योंकि सर मैंने 6 फैकल्टी लिया है, 6 फैकल्टी लिया है, so there will be 6 encounter in 6 months duration, अगर ये प्रोजेक्ट तब तक चलता है तो। अदरवाइज मैं इसको टाइमिंग कम कर दूंगी सर। एंड ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर
for each procedure will last for 10 to 15 minutes. Sir, ये docs format में लिखा है कि each every time you will observe it is for 10 to 15 minutes only, and feedback period is for 5 to 10 minutes. Okay. Okay. So, how will you assess the performance of the trainee? The performance of the trainee will be rated in a 6-point scale. The 1 to 2 is for the level of competence when it is below expectations. 3 is for the borderline. 4 is as per the expectation competence level is there, and 5 and 6 are for above expectations. Sir, I have taken this from the DOPS format, which has been used in the other aspect of the dentistry. One has been used for the Okay. another department of the dentistry, so I have taken it from there. So regarding the Gantt chart, I have not filled it up. I have just written the task and the activities, structuring the research project, ethical clearance from the apex body, then faculty and panel formation for the assessment, then the DOPS तो training लेकिन बना session. दीजिए। हाँ सर, मैंने ये बना दिया है। आप इसमें सर खाली मुझे देखिए कि लिस्ट मेरा सही है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। आप एथिकल क्लियरेंस और फैकल्टी पैनल फॉर्मेशन और डॉप्स ट्रेनिंग वो तीनों साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एथिकल में अच्छा। आपने अप्लाई किया तब तक आप फैकल्टी को ट्रेन कर दो, डॉप्स का ट्रेनिंग सेशन करवा दो। देखो, assessment of हाँ after the assessment of PG student you can finish it off till you get the ethical clearance, ओके सर। क्योंकि जो नहीं सर, 7 मैं नंबर इसमें वाला है वही। हाँ हम्म हाँ सर, ये सीक्वेंस ठीक है कि मैं इस सीक्वेंस में कुछ इधर उधर करूं? मैं ये ठीक है, पूछ रही ठीक है, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके। वही मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोजेक्ट वो अप्रैल 24 में हो जाए और मई 24 तक 1 to 6 पॉइंट तक हो जाए। हूं। अच्छा, मई 24 तक 1 to 6 पॉइंट, ओके। या फिर 15 मई तक, अगर आप हमारे पास टाइम कम है तो जब तक आप एथिक्स कमेटी का सब कुछ चल रहा है तब तक आप 6 पॉइंट तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें आप कुछ ठीक है। सब्जेक्ट को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, वो तो वैसे भी कर सकते हैं, अच्छा सर, ये विदाउट प्रोजेक्ट भी वैलिडेशन कर ऑफ सकते द, हैं। लेकिन सर ये वैलिडेशन ऑफ द क्वेश्चनर मैं कैसे करूं? नहीं, वैलिडेशन ऑफ मॉडिफाइड डॉप्स है ना। हाँ सर। देखो, आप सबसे पहले ट्रेनिंग दे रहे हो, फिर डॉप्स बना रहे हो हाँ आपके खुद के, हाँ तो हाँ डॉप्स जो हाँ फॉर्म आप बना दोगे तो वो भी हाँ आप पीयर फीडबैक लेके कर सकते हो, वो तो आप एज ए सर, इनोवेशन इन योर वो डिपार्टमेंट भी कर फॉर्म सर सकते मैंने हो। बना दिया, डॉक्स फॉर्म मैंने हाँ बना बस दिया। बस, तो छह तो छह लेकिन पॉइंट तक का सब कुछ आप कर सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन इसमें इसको अभी जैसे ये मॉडिफाइड डॉक्स फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर, मैंने सर ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लिया है। आप काइंडली सर उसको ओके थोड़ा सा देखिएगा। इसमें जो मैंने मॉडिफाइड डॉक्स फॉर्म ये सर मैंने बना दिया है, वो जो दूसरा वाला फॉर्मेट था उसको देख के उसी हिसाब से बनाया है। और इसमें क्वेश्चनर मैंने मैं अदर कोलिग्स कैन आल्सो गिव द फीडबैक कि जो कॉम्पिटेंचर का प्रोसीजर होता है उसको देख के मैंने डॉप्स के जो क्वेश्चनर है उसके साथ मर्ज किया है इसको ना। जो डॉप्स का क्वेश्चनर सर था उसको मैंने बोल्ड में लिखा है, और उसके नीचे नीचे अपना जो मॉडिफिकेशन पॉइंट्स है उसको मैंने लिख रखा है। Madam, just for curiosity, हाँ DOPS is observing the clinical skill. Are you assessing ओके। his knowledge? Because first नो, point you are क्लिनिकल saying स्किल्स नहीं नहीं, फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ, उसने सर क्योंकि लिखा था आपका डॉप्स फॉर्मेट में ही ये क्वेश्चन था सर, आपका नॉलेज जो प्रोसीजर आप करने वाले हो उसके बारे में आपका but वो बेसिक नॉलेज है कि नहीं। knowledge मतलब तो आप क्या उसमें उसका क्वेश्चन चेयर हाँ, साइड मैं कुछ वाइवा उस भाई बा सर यही तो मुझे पूछना था, नागदा मैम अगर आज होते तो मैं पूछती। मैं अभी ये नहीं नहीं, देखना अभी चाहती मैं हूँ कि आपको हाँ पेशेंट लेट इन, मी शेयर वन थिंग यस सर। हाँ कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हाँ डॉप्स के स्किल का फॉर्म आपने जो बनाया है यस सर। ये फिलअप करने के लिए, ये फिलअप करने के लिए है, लेकिन ये जब आप हाँ फिलअप करने दे रहे हो उससे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन गाइड बनाना पड़ेगा आपको। ऑब्जर्वेशन गाइड, ओके। अभी जो परियार सर ने क्वेश्चन पूछा ना आपको कि हम्म नॉलेज ऑफ एटोनॉमिकल नेटवर्क ऑफ मैक्सिला, तो वो आप हम्म कैसे असेस करोगे? हम्म। सर उसके लिए ना मैंने सोचा था कि मैं पेशेंट को सॉरी स्टूडेंट को मैं पूछूंगी, आप जो अभी क्लिनिकल प्रोसीजर करने वाले हो, सपोज किसी पेशेंट का ऊपर और नीचे जबड़े का उसको इम्प्रेशन लेना है, मेजरमेंट लेना है,
तो मैं उसको बोलूंगी कि उसको दिखाओ मुझे पेशेंट के मुंह में कि बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है, दैट आई हैव थॉट, जो इम्पोर्टेंट अभी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है ना। मैं फिजियोलॉजी से हूँ, लेकिन फिर भी एक मैं पूछ रहा हूँ हाँ आपको कि अगर मुझे सर मैं ये यही, स्किल करनी है, हाँ हाँ अगर मुझे ये करना है, तो सबसे पहले क्या मुझे 2 पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे, यहाँ से वहां तक लेना है वो? सर मुझे इसमें अगर ये यहाँ से दिया यहाँ है, तक का लेना है। हाँ सर इसमें ये दिया है डॉक्स फॉर्मेट में, ये जो मैंने इसको कन्वर्सन करके अपने वाले प्रोसीजर के हिसाब से लिखा है ना, इसमें ये लिखा है कि आप जो भी क्लिनिकल प्रोसीजर करने जा रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ बेसिक, रहा हूँ। आप इसको हाँ 2 मिनट के लिए भूल जाओ, डॉप्स फॉर्म को 2 मिनट हाँ के लिए भूल जाओ। आप हाँ मुझे हाँ ये बताओ कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हो, और अदर पार्टिसिपेंट कैन आल्सो ओपाइन, कि आप कर रहे हो मेजरमेंट, ठीक है? हम्म तो हम्म जब मुझे मेजरमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगा? हम्म। आप बोलो कि 2 पॉइंट, मुझे कौन सा एरिया मेजर करना है, वो मुझे उसमें आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या मेजर करने जा रहा हूँ। नहीं, कैसे करना है? आप मुझे यू जस्ट एक्सप्लेन द स्टेप। ये प्रोसीजर के जो स्टेप है वो मुझे एक्सप्लेन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। सर अच्छा इसमें सर, मेजरमेंट मैडम सर एक, हाँ सर बोलिए। नहीं सर, जो पूछ रहे मेजरमेंट नहीं होता है सर, वो फर्स्ट स्टेप है, वो एक इम्प्रेशन का ट्रे जो होता है वो सिलेक्ट करता है। जब वो सिलेक्ट करता है तब वो पूरा एनाटॉमिक लैंडमार्क कवर हो रहा है कि नहीं उसको देखना होता है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हाँ, तो मेरा वही कहना है कि अगर वो कवर नहीं कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसको नॉलेज नहीं है। हाँ सर ये यही मेरा चीज, परसेप्शन है। आई एम नॉट अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। हम्म। सर इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने जो फॉर्म सर ना मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, आई रिक्वेस्ट ऑल माय कोलीग्स जो हैं यहाँ पे पैनल पे, आप इस फॉर्म को एक बार देखिए और उसमें जो जो मॉडिफिकेशन चाहिए होगा ना तो आप मुझे सजेस्ट करिए। तो क्योंकि मैंने ग्रुप हाँ, में डाला था, तो मुझे भी नहीं पता आज है आज सर, फिर से क्योंकि डाल मैंने, दीजिए। नहीं, आज नहीं आज आज फिर से डाला डाल है सर, दीजिए। डाला है आज सर, डाल दिया आज है, भी मैंने ओके। डाल दिया। और दूसरा, और दूसरा मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑब्जर्वेशन गाइड हाँ जैसा बना दीजिए कि ये ऑप्टेन इन्फॉर्म कंसर्न है, तो मैं उसमें क्या देखूंगा? वो उसको पेन एंड हम्म पेपर पे लिख रहा है ये देखूंगा कि पूछ रहा है कि, सो यू जस्ट प्रिपेयर वन ऑब्जर्वेशन गाइड फॉर ईच ऑफ दिस पॉइंट। हम्म हम्म। सर मैंने अभी इसको ये लिखा Ma'am, है, हाँ ma'am, will you be just observing the procedure or you'll be asking individual question? Like नो for नो नो, example, if he's नहीं selecting a उसमें क्या tray दिया है, selection. उसमें क्या दिया है कि आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, वो क्या कर रहा है बस आपको साइलेंटली Okay. ऑब्जर्व करना है और उसको फ्री हैंड छोड़ना है, उसको अपना काम करने देना है। वो उसका जब काम खत्म हो जाएगा ना, 10 to 15 मिनट्स आपने छोड़ा है, आप यू जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व। उसके बाद वंस द वर्क इज फिनिश्ड यू गिव योर स्ट्रक्चर फीडबैक, उसमें ये दिया है। Okay. जैसे कि मैंने सर बोला कि सर मैं आपको तो नहीं, चिन्मय सर नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन बाकियों के लिए ना ये ओपन है, तो क्योंकि हम मेरे फील्ड से हैं, तो यस यस। जो डॉक्स का फॉर्मेट दे रखा था उसी हिसाब से मैंने इसको प्राइमरी इंप्रेशन फॉर द कंप्लीट डेंचर को पॉइंट्स जो है ना उसके हिसाब से मैंने फीड करने की कोशिश किया है कि ये पॉइंट्स है, क्योंकि मुझे कहीं से ऐसा कुछ मिला नहीं। तो जैसे ये नॉर्मल फॉर्म, उसमें से कुछ कुछ फॉर्म्स जो पॉइंट्स थे सर जो मेरे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं थे, उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये वाला पॉइंट लिख रखा है कि प्लीज मार्क दिस इफ यू हैव नॉट ऑब्जर्व द बिहेवियर एंड देयरफॉर फील अनेबल टू कमेंट। हाँ तो ये वाला फॉर्म हमने रखा है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ था कि वो आपको कंपलसरी मार्क करना है, तो मेरे प्रोसीजर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। Madam, analgesia, is it required? नो वी कैन हाँ मार्क हियर, नॉट रिक्वायर्ड। वही मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है, ये डॉप्स का फॉर्मेट है। तो जहां जहां पे जहां जहां पे डॉप्स का फॉर्मेट मेरे प्रोसीजर के साथ सूट कर रहा है ना, वो उसी के अंडर मैंने ये पॉइंट्स लिखा है। जैसे कि उसने लिखा था कि डेमोन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट प्री प्रोसीजर अरेंजमेंट उसने ठीक से किया है कि नहीं, तो ऑल दिस पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर। और जहां पे उसने लिखा कि एनाल्जेसिया एंड सेफ सेडेशन, यहाँ पे तो मैं कोई एनाल्जेसिया नहीं दे रही हूँ, इसलिए वो वाला कॉलम मैंने पॉइंट्स लिखा है, लेकिन मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा है। अगर मैम बोलेंगे कि इसको हटा दो तो ये हटा देंगे, अगर मैम बोलेंगे कि इसको रहने दो बट यहाँ पे खाली लिखोगे कि नॉट अप्लाइड, तो हम एनए लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी एक पॉइंट है वहां पे, तो मैंने टेक्निकल एबिलिटी में ये ऑपरेटर्स पोजीशन, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट ऑफ द ट्रे इन द माउथ, ये सब लिखा है मैंने। तो आप लोग ना ये फॉर्म देख के मुझे कमेंट कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको इरेलीवेंट लग रहा है और कौन सा और क्या ऐड कर सकते हैं।
And after this DOPS form, sir, there is 2 feedback form. One feedback form is for the students कि student को feedback देना है to the assessor, and other one is assessor feedback देगा student को. तो there are total 8 questions. उसमें ये पहले student का feedback है कि do you feel the DOP method of assessment is better than conventional. ये सब मैंने लिया है, एक दूसरे आर्टिकल में पब्लिश हुआ था, वहां से मैंने अप्लाई किया है ये वाला. और ये है कि फीडबैक फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट. ओके, इतना ही है सर बस. ओके. तो बस आप सर सब लोग इसमें उसमें मेरे देखिए, मैडम को हेल्प कीजिए. हाँ सर, क्योंकि ना इसमें सर कहीं पे वो दिया नहीं है, मतलब जो स्ट्रक्चर्ड है उसके हिसाब से आपको अपना प्रोसीजर फिट करना है. तो ऑल ऑफ माय कलीग्स कैन गिव द कमेंट. मैंने उसमें शेयर किया है कि उसमें क्या अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है आप लोगों को. तो मैम होते तो मैं मैम से आज पूछते, मैम बिजी है ना, तो इसीलिए मैं नहीं पूछ पाई. मैं आई हैव आल्सो टॉक, मैंने ज्योत्सना मैम को भी मेल किया था देखने के लिए. तो आई मैडम आल्सो ये रिमाइंड. जेनेरिक फॉर्म में जो आप बता रहे हो, ये हाँ. हेल्थ रिलेटेड था या ऐसे वाज इट फॉर अ क्लिनिकल प्रोसीजर, हेल्थ रिलेटेड क्लिनिकल प्रोसीजर? सर एक्चुअली डॉप्स का फॉर्मेट ना कॉमन फॉर्म अवेलेबल है, जेनेरिक फॉर्म. जो उसके बाद जैसे किसी ने मैंने देखा है सर कि सर्जरी में एनेस्थेसिया वालों ने यूज किया है या किसी ने गायनी वालों ने यूज किया है. फॉर्म इज सेम सर, बट आपको फॉर्म के हिसाब से अपना क्वेश्चनर को, अपना क्लिनिकल प्रोसीजर को उसी हिसाब से मैच करना है. मैंने भी सर बहुत सर्च किया कि मैं कहीं से निकालूं, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं. फिर अपने मन से मैंने देखा कि इसको क्या क्या ब्रेक कर सकते हैं पॉइंट वाइज. तो एक नया प्रोजेक्ट आपको मिल गया पूरा. यू कैन हैव अ बुकलेट ऑफ स्ट्रक्चर डॉप्स फॉर प्रोस्थोडोंटिस्ट पीजी स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली सर सर. क्या होगा तो नहीं पता, लेकिन मुझे जब तक ये हो नहीं जाता नर्वस लगता है कि मतलब ठीक से किया है कि नहीं किया है. मैडम एक्चुअली एमडीएस एग्जाम का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, डॉप्स के ऊपर हम कर सकते हैं. सर हम कर सकते हैं. एक्चुअली मुझे नागदा मैम ने बोला था कि आप ना फाइनल इंप्रेशन को भी ले लो, लेकिन सर मुझे ये है कि अगर मैं इसको पहले देखूं ये सक्सेस हो रहा है, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ मिलके मैं इसको फिर टेकअप कर सकती हूँ कि 1 by 1 करके फिर सारे कॉलेजेस में हम लोग इसको एक मल्टी सेंट्रिक स्टडी करके कर सकते हैं. लेकिन अभी बिगनिंग के लिए सर मैंने सिंपल सा लिया है ताकि वो पहले पता तो चले कि जो किया है वो ठीक है. बिल्कुल बरोबर. अभी आपकी बेटी पूछ रही है मम्मी कितनी देर है. हेलो, हाय. बस 2 मिनट है बेटा, मम्मी को छोड़ रहे हैं. Okay. So any specific question regarding ma'am's study or procedure or anything? तो ये डॉप्स आपको वैलिडेशन करना है. और फीडबैक भी मैं ऐसा बोलूंगा कि थोड़े 2-4 फीडबैक और फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि जब हम ये प्रोसीजर कर ही रहे हैं तो इफ यू कैन ऐड 2-3 मोर पॉइंट्स इन अ फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट एज वेल एज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट. ठीक है सर. सर मैंने शेयर किया है और कुछ कुछ कमेंट्स है तो आप दीजिए उसमें, तो इट विल बी हेल्पफुल. श्योर श्योर. ठीक है, तो if there is no more questions we can call for a day, and I hope we have today fruitful discussion on the both the project. So it is not learning for only both of them, but it is learning for all of us. So if anyway today they are doing this project, sometime we may do some another project. सर आज का भी पूरा रिकॉर्डेड है ना सर? हाँ, आज का भी पूरा रिकॉर्डेड है. शेयर समीक, आपका पॉइंट्स हमने नोट नहीं किया है, शाम तक भूल जाएंगे. समीक, हाँ सर, रिकॉर्डेड है ना भाई? सुनिए, हाँ सर, रिकॉर्ड से कल अपलोड करना किस कल अपलोड हो जाएगा एलएमएस में. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. ओके, बाय बाय, ऑल द Yes, बेस्ट. sir. और अभी सबके प्रोजेक्ट एक्सेप्ट एक मैडम के अलावा सबके हो गए, सब स्टार्ट करो प्रोजेक्ट, है ना?